हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री का जो लेसन नंबर 1 है सॉलिड स्टेट, उस बेसिस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एमएसटी सीईटी के लिए। गॉट इट। उस बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। ओके, मैक्सिमम बच्चों का सॉलिड स्टेट हुआ होगा, ठीक है। बट सीईटी की जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसका क्वेश्चन या उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उसमें से मैंने 10 क्वेश्चन आप लोगों के लाए, उसमें से आपको 2 सॉल्व करने हैं। ओके, सॉल्यूशन यहाँ दिया है, उसका आंसर दिया है, बट सिर्फ आपको मीन्स आया समझ में आया है नहीं, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। वो बात अलग है, मैं आपको वो कौन सा क्वेश्चन है वो आपको मैं बाद में बताऊँगी। बट अभी क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो है द पोलर मॉलिक्यूल। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड तक देखो, एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है, आधा अधूरा देख के कुछ समझेगा नहीं। ओके, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलते रहे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ प्रिपरेशन कैसे करना है एमएसटी सीईटी के लिए उसके बारे में आपको समझिए, ठीक है। तो पहला जो आपको क्वेश्चन है वो है कि भाई पोलर मॉलिकुलर सॉलिड क्या करता है। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये मैं आपको डायरेक्टली रीड करके बताती हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है द टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग यूनिट सेल डायमेंशन। उसमें फॉलोइंग 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो इसका जो आंसर है टेट्रागोनल का ये है A=B, और ये एन α=, तो ये ऊपर वाला है वो है, और ये जो नीचे वाला आपको जो दिख रहा है ना, ये क्यूब का है आंसर, ठीक है। क्यूब का आंसर दिखा है। और तीसरा वाला द अरेंजमेंट ABC विच शोज एज अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग एज अ स्पेस सेंटर एंड इस रिफर एज अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, इसका ABC का जो अरेंजमेंट है ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग करता है। ओके, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में AB होता है। Fourth question, how many number of atoms are there in cube base unit cell having an atom on each corner and 2 atom on each of a body diagonal of a cube? 9. Okay, सॉल्यूशन यहाँ दिया है, आप समझ लो, इसको देख लो। 8 × 8 क्या, ओके, यूनिट सेल का क्वेश्चन के बेसिस पे आया है आपका। ओके, ठीक है। फिफ्थ वाला द परसेंटेज ऑफ अ फ्री स्पेस इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इज 32%, 100% and 68% is equal to 32%. So you got the 32% BCC, and the SCC has the same as the 68, 32 and 74 as well. Okay, learn this all the formulas, learn this unit cell, all about this, the percentage of that free space. Okay, sixth one question has been given that atom C and D from FCC crystallized structure, atom C is present at the corners of the cube and D is at the face of the cube. What is the formula of the compound? Okay, what is the formula? The C is the corner, means 8 into 1/8 is equal to 1. D face, means face have the 6 into half into is equal to 3. If you divide it, it gives you the 3. 6 into 1/2 is equal to 3, and is shown as a C1 and D3, and a C1 and D3. This all about the D faces. C corner means 1, only one corner is present. C1 D3 is equal to CD3. Okay, you can say C1 D3 or CD3. Okay, total of that answer. Okay, so this is the sixth question. Now our seventh question is given as a sodium metal crystallizes in BCC lattice. BCC lattice with the edge length A is equal to 8.29 A degree. What is the radius of the atom? So this is the all about the formula. It is related to the formula, so you have to know the radius of the atom. Okay, you have to know the edge length of that BCC lattice, so you can do it. Okay, 8-1 question has been given, so this is your homework, you can do, and if you have done, so you can comment, and if you have the doubts on that question number 7, you can ask me. Okay, answer has been given, don't worry. 8-1 question has been given, crystallized aluminiums. Okay, aluminium crystallized a cubic closed packed structure. Its metallic radius is 125 pm. How many unit cell are there in 1.00 centimeter cube of aluminium? So these two questions 7 times, yet you have to find out and you have to give the answer. Is it correct or wrong?
Okay, the question has been given secret, so you have to solve. Any doubt you can ask us. Ninth one question has been given that an ionic lattice has r plus upon r. The radius of the 0.524 is coordination number is 6. Coordination number, how many are there? 6. Okay. The diamagnetism is exhibited by what dash? Diamagnetism is cancelled, is deleted portion. So if you want, so learn it. Okay. But it is deleted portion. But in MSTCT it may be not asked. Diamagnetism is exhibited by dash, means the water, and this has been given the rough part to do. Okay, like calculation, the sixth one question has been given that C is the corner, so you can do the calculation at here. So after 10 to 20 questions you have to add your book, you have to keep the rough page for calculation, for formula allocation, and all other things. Okay, the unit cell dimensions if you want to find out. Okay, all we have to study the Harman's rough work, so keep it in mind that you have to keep in the rough page at below. Okay, and all the questions related to the solid state. I hope you understand all the questions. Maximum I have not given, but minimum 10 questions I have solved here and understand to you. But any queries, if you have the doubt, you can ask me here. And I have uploaded in our channel physics lesson number 1 rotational dynamics. On that basis, what type of questions or what type of formulas you have to learn before rotational dynamic question. If you want to understand, before that you have to learn the formulas. If you don't watch the video, please go and watch, and don't forget to share this video if you like, and subscribe my channel. And nowadays the students are becomes lazy, so don't become lazy. Do your study every day, every time, and properly. Okay, the result may become any time, but don't wait for that. You start your preparing, don't stop it. Okay, so see you again. Now the second lesson will be the solutions. On that basis we will just take some formulas if there is, and after that we will solve on the questions. Okay, now bye bye.